repetition means the same statement or set of statement you are going to execute again and again. It is called iteration. Okay, so this is a repeated process until some condition will be met. So uh, the general way of representation or using the iteration, there are three types of iteration we can use. Number one, while statement. Then number two, do while statement. And number three is for statement. So these are three ways you can make the iterations. Okay, you can repeatedly execute an expression. So first thing first, I mean, we will start from the while statement. So how we can repeat expressions using while statement, we will learn today. So for while statement, we can use this this while, I mean, statement in C++. We can use as while is actually a keyword, and we will use it with one condition. And then set of expressions will be executed. Okay, so this is usual way how we express the while statement. We will use the while statement in C++ program. So what will happen actually, whenever a compiler will read this line, this one, the last line which I have written here. So after reading the while, it will understand that this is a iteration or loop. Okay, so we are going to make a repetition of something. So this one will be the condition where you can use any comparative statement that something is less than or equal or greater. So such conditions which we have used earlier in our previous programs, you can use those conditions here. So if the condition will be true, this expression will be executed. Now, this is interesting to understand that this condition will run up to a specific number. Okay, so you will give that number within that condition. So if until, I mean, this condition will be false, this expression will be printed again and again. So whenever this condition will be false, this the compiler will skip this expression and go downwards towards another expression which is out of these parentheses. Okay, so this is worth remembering, that any expression which you are going to use with the while statement or any other loop statement, so that expression must be written within these parentheses, two parentheses which I have written already. Okay, so this is a general concept of iteration or loop in C++. So we are focusing today on only while statement. So with the while, how we can achieve that looping, that iteration, and repeat our expressions again and again. This is the statement how we use. Now I'm gonna give you some of the examples. I have already prepared some of the examples in Dev C++. So let me share that screen so that you can understand.
what I have written it in an example. Okay. Okay, what you see in this screen, this is a very easy program which we are which we just representing here, where we want to integer 0 or 1, so that we can understand that this means 0 will be false and 1 will be considered as true. Okay, so if it is, and that statement will run accordingly. I mean, there is no repetition in this program, but to understand how while statement is running. So what I have done here is I have introduced two integer type variables, where I have initiated one of them with 1, and then I have demanded from the user that, okay, enter 0 or 1, where 0 will be false or 1 will be true. So that will be solved in that will be saved in a variable, and then the while statement has been started, where the condition will be checked. If a is equal 1, then it will be written as the statement is true. Okay? Then there will be an increment in it, and this will go back to the while statement. So now what is the value of I? The value of I become 2 now, because it was 1 in the beginning, and here there is an increment operator, and 1 plus 1 will be 2. So 2 will be checked in this condition. Okay, so 2 is equal 1, because I is sorry, a, which is what is you have given the number, it will be checked if it is equal. So definitely it will not be equal, because that number has been exceeded. Okay, so that if that this while statement will run until this condition will be true. Whenever it will be false, the control will go to this statement. Okay, so that will be printed, which is statement is false. So that will be end of that program. Now, if you will put a is equal to 0, so definitely a, when the condition will be checked, so this means 0 is equal 1, which is false. Okay, so 0 is equal 1, 1 is actually equal to 1. So 0 is equal to 1, then this statement will not run. It will go to the end, and statement is false will be printed. Whenever you will put 1, then it will be checked 1 is equal to 1. This statement will be executed, but unfortunately, this statement will also be printed. I will let you know why. Let us first execute this program. So my program is error free. Now F10, so that condition will be, that window will be shown. So let me actually reshare that, share once again that window, because you cannot see it. Okay, so enter 0 or 1 for the 0 for the false and 1 for the true. So let me put 0 first and enter. Okay, the statement is false because that condition was false. So that will be printed. I mean this expression which is with the while statement, compiler will leave it and just go below to the last statement where we have written statement is false. Now I will run once again, and you will see clearly that when we will put 1, there is a problem. Let me run it once again and share it
with you guys. Okay, I hope you can see now. So let me put 1 now, and you will see that the problem. So it is okay, I mean, when it will print statement is true. So why a statement is false is also printed. There is a slide program because I have intentionally given you as it is. There might be accordingly. And क्या मसला है भाई मोहम्मद हाशिम? Okay, so these two both printed, though both statements or expressions have been actually printed. So I would show once again that program, and then let us discuss. Okay, so here you can see that whether this statement is true now. The problem here is that this statement cannot be left because this is outside the main body of the while function. As I said earlier that with while it is good to use parenthesis, जो दरमियानी ब्रैकेट है वो यूज करनी चाहिए, तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को जाहिर करती है. जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे parenthesis के अंदर वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगे if this condition is true. Now in this case condition is actually true क्योंकि हमने 1 एंटर किया था, so 1 was actually saved in A. So 1 is equal to I, which is 1 as well. This statement is true. Now this statement, this expression will be then printed. Okay, statement is true. Now it will check further the second condition. ठीक है जी, अब I की वैल्यू क्या हो गई है? The value of I is actually who is this Arif Arai thing? Who is this Arif? Let me know immediately, otherwise I will block you. Okay. The students without name and roll number will be kicked off from the system. And repeated name and roll numbers will also be kicked off forever, and they cannot then enter inside this classroom. Okay, if ever I will see now the student without name and roll number, then they will be kicked out from that group of our class. Okay. So there is an increment now because I will go down and there is an expression that it will be there will be increment of 1 in it. So I's value will become 2. So here when again in while because it is a repeated process until it will be false. 1 के साथ तो ये हो गया true. अब I की वैल्यू हो गई है 2. ठीक है जी. So 1 is equal to 2, that will be false. It will leave this statement, लेकिन जो कंपाइलर है वो इस स्टेटमेंट पे भी आएगा, इसको भी प्रिंट कर देगा. Now what is your goal? That this statement must not be printed when it is true. Okay, यानी कि अगर वो 0 हो तो इस स्टेटमेंट को वो प्रिंट करे, which is statement is false. अगर वो 1 हो तो सिर्फ इसी को प्रिंट करे, which is statement is true. So I am giving you one little hint. With the help of that hint, you might modify this program and then you will achieve that goal. आप ऐसा कर सकेंगे, ऐसा करेंगे कि आपने स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक यूज किया था, तो
यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर बुक एंड योर प्रैक्टिस यू कैन मॉडिफाई दिस प्रोग्राम एंड अचीव द गोल। मेरा ख्याल है कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी और जो प्रॉब्लम आपने अब सॉल्व करना है उसकी भी समझ आ गई होगी। ओके Okay, I have designed another program, simple program, which is another exercise for the while statement. And here, what we want to do is to print odd numbers between 1 to 100. ठीक है जी, वो एक ही दफा 1 से 100 तक जितने ऑड नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो एक दफा वो प्रिंट कर दे। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग एज वेल कि हमने क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a which is integer type और मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया है विद 1 क्योंकि 1 ऑड है तो हम उसको प्रिंट करेंगे। while I have given a condition that a is less than equal to 100। अब ये 100 टाइम्स जो है वो बेसिकली इटरेशन चलेगी बार बार जब तक कि ये ट्रू होता रहेगा। अब a को हमने इंक्रीमेंट दिया हुआ है, दो उसमें ऐड हो जाए हर दफा, तो ये ऐड होते होते इंक्रीज कर जाएगा नंबर और 100 जब हो जाएगा तो उसके बाद ये लूप फॉल्स हो जाएगी क्योंकि a की कीमत बढ़ चुकी होगी। 101 जब होगा तो उसके बाद ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। तो हमने क्या प्रिंट करना है, हमने वो सिर्फ नंबर प्रिंट करना है जो इसमें ऐड हो चुका है। और तीसरे नंबर पे हमने व्हाइल स्टेटमेंट में ये किया है कि हमने इंक्रीमेंट दे रखा है 2 का, क्योंकि 1 में 2 जमा करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास, ठीक है जी। सो दिस लूप विल रन और दिस इटरेशन और रिपीटेड प्रोसेस विल रन अंटिल दिस कंडीशन विल बी ट्रू। उसके बाद जब ये फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगी और जो कंट्रोल है आपका वो इधर आ जाएगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम and then see what is happening. So this is error-free program. I am just making its I have run this. Let me share that screen. You can see that all the odd numbers have been printed. So ये आपके सामने है। So 1 3 5 7 ये बड़ी तरतीब के साथ मैंने रखा है। I have used a tab character in printing statement so that you can also use that and you can print in horizontally there. Okay, so 1 3 5 7 9 सारे odd numbers 100 तक उसने प्रिंट कर दिए हुए 99 तक। तो आप ये दिस इज अ सिंपल वे टू एक्सप्रेस दैट व्हाइल स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब let me send you these programs so you can have this practice as well. So I would start from the main function, sending you on message. Where are the messages? Okay. ये एक प्रोग्राम है, इसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है। ओके, अच्छा, इसके साथ ही एक और प्रोग्राम भी मैंने जो है वो लिख रखा था। आई थिंक दिस इज एग्जांपल फ्रॉम योर बुक, so let us little bit this is little bit an advanced version of that while statement. So let me share that program once again on the screen. अच्छा जी, this program computes the sum 1 plus 2 plus 3 plus 4 as you can see in this statement, in this comment, that this program computes the sum 1 plus 2 plus 3 plus so on n for n input integer n। जो भी इनपुट आप देंगे, फॉर एग्जांपल आपने 5 दी है तो ये उन तमाम इंटीजर्स का सम ले लेगा, ठीक है जी। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, क्योंकि आपने 5 दे रखा था, और जितना भी आप नंबर्स देंगे उन तमाम का वो सम अप करके उसको वो प्रिंट कर देगा।
तो हमने प्रोग्राम ये किया है, इसके अंदर लिखा ये है कि हमने दो वेरिएबल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए, n एंड i। हाँ जी, अख्तर अब्दुल रशीद जी, ये हाथ खड़ा किया हुआ है साजिद महमूद ने। आप अपना माइक ओपन करें, क्या मसला है? साजिद महमूद, रोल नंबर 31। बेटा रिस्पॉन्स किया करें, ये किसी वजह से किया हुआ है, ये आपको गलती हो गई है, इसको खत्म करो। दीज आर इंडिकेशंस दैट यू हैव क्वेश्चन। तो डिस्टर्ब कर रहे हो आप क्लास के अंदर बिला वजह। अच्छा जी, दो वेरिएबल्स जो हमने इंटीजर टाइप जो है वो हमने डिफाइन किए थे। तो उसमें एक n है जो आपने नंबर देना है, जहां तक आपने इसको सम अप करना है, एंड देन i इज व्हिच विल प्ले अ रोल एज अ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, सो हमने क्या किया है, हमने सेकंड लाइन में, लाइन नंबर 11 यहाँ पे शो हो रही, तो उसमें हमने डिमांड किया है यूजर से कि वो नंबर यहाँ पर एंटर करे, और हमने उसको n में ही सेव करवा लिया। नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर वेरिएबल व्हिच इज इंटीजर टाइप एज वेल, एंड सम लॉन्ग जो है, दिस इज अनदर वर्जन ऑफ इंटीजर टाइप डाटा। ये इंटीजर जो है ये 32 बिट है, कम स्टोरेज होती है इसके अंदर। लॉन्ग जो है वो 64 बिट है, इसके अंदर स्टोर डाटा ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा डिजिट्स इसके अंदर समा जाएंगे आसान लफ्जों में। तो लॉन्ग हमने यूज कर लिया है क्योंकि शायद हो सकता है कि ज्यादा नंबर्स आप उसमें एंटर कर दें। तो हमने वो वेरिएबल सम लिया है जिसको हमने जीरो वैल्यू दी है। ठीक है जी। नाउ आई हैव यूज्ड while statement for the repetition or loop, so I is less than equal to n. Wait a sec, I have a call. Tidak. So we have started the loop, which is while statement, and with while we have used those two parameters which are I and n. So we have initialized I with the 1 because we will start from 1. Every number which we will give in n, for example 5, which I have given you the example, तो वो 1 is less than equal to 5, वो उसको check करेगा that is true actually. Okay, so this statement will run then if it is true, this condition is true. So what will happen कि वो इंक्रीमेंट उसके अंदर करेगा और सम में जमा कर देगा। ठीक है जी, सम में जमा हो जाएगा। सो वन विल बी फर्स्ट द वन विल बी स्टोर्ड एंड देन सेकेंड इटरेशन विल रन। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है जी, 2 इज लेस देन 5, अगेन दिस विल रन। अब यहाँ पर एक जमा हो चुका था क्योंकि पहले 0 था। ठीक है जी, तो एक जमा हो चुका है, एक में ये 2 जमा करेगा, दैट विल बी 3 और 2 और 1 को जो है वो उसको में जमा कर देगा। नाउ दिस विल रन वंस अगेन 3 4 5, और 5 के बाद जब जो है वो 6 होगा तो उस वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये सारा फिनोमेना ये जो आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या सम में जो ऐड किया हुआ है ये खत्म हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट विल देन रन। ठीक है जी, ये जो आपके पास सी आउट स्टेटमेंट है ये रन होगी, और इसमें क्या करेगा वो कि
n जो है वो उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि n नंबर्स तक वो प्रिंट करके सम में जो वैल्यूज होंगी वो उसको प्रिंट कर देगा। अब सम में क्या वैल्यूज होंगी, अगर हमने n 5 दिया था तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके वो सम को प्रिंट कर देगा। तो इसका जवाब क्या आएगा, 5 में 4 जमा करें 9, देन 3 12 हो गए 12, एंड देन 15 एंड 16 जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ, एंड देन दैट विल बी एंड ऑफ दैट प्रोग्राम। अब इसको एग्जीक्यूट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन लाजमी करे, क्योंकि ये इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी वेरी यूजफुल। ये बहुत यूजफुल स्टेटमेंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और इसकी 12 हमने एक्सरसाइजेस भी करनी है, मैं आपको उसकी एक्सरसाइजेस दूंगा। तो यहाँ पे किसी को समझ नहीं आई तो वो फौरन जो है वो क्वेश्चन कर ले। नाउ इन द मीन टाइम आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। तो जीरो एरर्स हैं इसमें, F10 हमने किया, तो इसको जो है वो let me share that screen। अच्छा जी, अब ये एग्जीक्यूशन के बाद रन जब हमने किया इसको तो वो उसकी स्क्रीन आपके सामने है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 की एग्जांपल दी थी, तो 5 ही यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि 5 नंबर्स तक वो सम कर दे, 1 से लेके 5 तक जो है वो उनको ऐड करके हमें जवाब दिखाएगा। सो एंटर। So the sum of the first 5 integers is 15. Okay, we have calculated wrong before. तो 5 4 9 हो गए, 3 12, ये गलती कहाँ कर रहे हैं हम भाई, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है 15 ही बनते हैं भाई, गलत हम कर रहे हैं उसको। ओके, सो दिस इज ट्रू, I mean this is the program, I mean the basic of that program, the